So Arush, Pravra, because we have imaginary part of z and we don't know what is z, let's assume z is x plus iy. So when we say imaginary part of z, Pravra, it's y, and y is greater than equal to 1 बोला है. इसका ग्राफ कैसा होगा y greater than equal to 1 का? What do you think will be the graph of y greater than equal to 1? हाँ, so y equal to 1 पे एक straight line draw करेंगे, right? And greater than equal to, see, if this is y equal to 1, yeah, parallel to x axis, this is 1 on the y axis, and greater than equal to means upward direction. This entire region basically is y greater than equal to 1. This entire region, ये पूरा जो region होगा पूरा, this is y greater than equal to 1. Next is, अरे ये सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों के पास, तो चलो बुक्स निकालो, you have to solve this now. Mod of z minus 2 minus I is equal to 3. Solve this और फिर इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं. z minus 2 minus I equal to plus minus 3. What is z over here? वही y है. x plus iy. Correct. पहले आप लोग नॉर्मली सॉल्व करो, फिर इसका ट्रिक बताता हूं मैं. सो दिस इज mod of x plus iy minus 2 minus I equal to 3. So this is mod of x minus 2. I can take I common from the I wala terms. This will be y minus 1. Do you remember the formula for modulus base? नहीं, but root भी तो आएगा. अरे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉट द जनरल मॉड्यूलस. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? a square plus b square. Over here what is a? So it's root of x minus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square equal to 3. चलो ये square root हटा दो, just take like square both the sides, you will get this. Do you know, Pravra, that this equation represents which shape? What does this represent? Arush? ये cheating है. ये सब ये बहुत सिखानी है. वाह. So is this parabola, hyperbola, ellipse, circle? What is this? हाँ, ये 11th में था. Circle है ये. Correct. What is the center of this circle? नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख के बताओ. 2 and 1. 2 comma 1. Yeah, you have to basically equate both the brackets. अच्छा, do you guys realize 2 comma 1 मतलब देखो ये 2 और ये 1. This will be the center. 2 comma 1. What is the radius? Radius what? 3. 3. R square होगा right? So radius is 3. See, if radius is 3, you have to realize कि circle ऐसा बनेगा इसका, something like this. नीचे भी रहेगा. हाँ, अब ये origin से पास नहीं होगा, यहाँ पे दिख रहा है but नहीं होगा. Distance निकाल के देख लो, it was not 3. It is in fact a root of 5. आपने कब करा ये? It's root of 2 square plus 1 square, right? अभी it's distance formula, basic cheese square. Root 5, yeah. So it will not pass through the origin. थोड़ा proper बना दे इसको, something like this. Okay. अच्छा, but now they have written, हाँ, so this is the circle, ठीक है ना? This is the second shape, the circle. ठीक है, आगे बढ़ते थर्ड वाला लेकर. पर ये हम कर क्या रहे? जब अंडरस्टैंडिंग द 3 सेट, तो फर्स्ट वाला सेट तो ये रेड रीजन है. सेकंड सेट इज दिस बाउंड्री ऑफ द सर्कल जो ब्लैक में बनाया है. सेमी सर्कल अभी तक कॉमन रीजन बोल सकते हैं. हां, बोल सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. विल नाउ टेक दिस. अच्छा, इसका एक ट्रिक बता देता हूं. See, the thing is, what is the basic idea of a circle? What is the basic definition of a circle? A circle is basically a collection of all the points, ठीक है, which are on the boundary of the circle, and they are always at a fixed distance from a fixed point, and that fixed point is center front. ये बोल सकते हैं, बराबर. So, if you look at this, हमने कल डिस्कस किया था, what is modulus? Modulus is basically distance. ठीक है, यहाँ पे modulus हो रहा है z minus of 2 plus I can write this as mod of z minus of 2 plus I. Makes sense? Yeah. And that is equal to 3. Yeah. Modulus is distance. तो यहाँ पे ये किसका distance है? It is distance between these 2 points, z and this point. So do you realize this represents a circle, but the center is 2 plus I, and see, we can see that center is 2 plus I, and this distance is radius. तो 1 नहीं समझा, वापस रीड. अरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 2, 1 बोलो या 2 प्लस i बोलो, एक ही तो बड़ा बड़ा. ये 2 प्लस 1 i है ना, बट i क्यों बीच में आ रहा है? अरे दिस पॉइंट 2, 1 इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इट इज 2 प्लस i.
Imaginary part. This is imaginary axis. One eye. Yeah, one eye. Yeah. Okay. What I'm saying is, Adush, what is the definition of circle? That it consists of all those points. So यहाँ पे वो point represent हो रहा है z से. It consists of all those points z which are at a fixed distance from certain point. So here this point is this, and mod है मतलब distance की बात हो रही है. And what is that fixed distance? That fixed distance is 3. What I'm trying to say is you do not need to do this actually. If you understand this equation, whenever you come across this equation where we have mod of z minus some complex number equal to a fixed number, देखो right hand side में z नहीं है, right hand side में एक fixed number है, and that number is a real number. It has to be a real number. अगर वो complex number होगा तो story change हो जाती है. So this has to be a real number. And if we have that, then it's a circle. The center has to be this, radius has to be this. If you can remember this, your job becomes easier. Then you don't have to do this in every example. Z represents any number on the boundary of circle. Yes, Z. Yes, Z. See, this is Z. Even this is Z. Even this is Z. It just represents all the points on the boundary of the circle. Distance from Z to plus I is 3. So exactly. Exactly. Yeah. ठीक है, आगे बढ़े. चल, next वाला लेते हैं. चल, I want you to solve this part now. Real part of 1 minus I into Z is equal to root 2. Okay. Solve this. Real part of I क्या है? नहीं, real part of I नहीं, real part of 1 minus I into Z. First let's calculate 1 minus I into Z. So we have 1 minus I. Z is x plus I y. चलो इसको सॉल्व करो, एक्सपांड कर दो पूरा, तो ये होगा x plus I y minus xi minus I square y. तो ये हो जाएगा x. See, I am focusing only on the real part now. Which is the real part? X, and this is real part. This is plus y. What is the real part of this problem? It's root 2. Real part is root 2. So this is the final equation. Real part equal to root 2. Okay. देख पढ़ यहाँ पे पढ़. Real part is equal to root 2. So what does this represent? X plus y equal to root 2. Square नहीं है ना? Straight नहीं है. X और y है ना, square. ये करने की क्या जरूरत है? इसका होप नहीं है, मार दिया आपने. नहीं, I was expecting straight line, but then you are like circle. तो ये waste हो गया, मतलब क्या करें? Anyways, चलो. So root 2 guys, x plus y equal to root 2, मतलब it will pass through root 2 comma 0 and 0 comma root 2, बराबर? अब देखो यहाँ पे any issues? जो circle your line होगा, straight line. It will pass through these 2 points, right? Root 2 comma 0 and 0 comma root 2. Now you will ask me, sir, आपने कैसे find किया ये? What's simple है, x को 0 assume करो. अच्छा वो हाँ. बचपन में किया था यार. Fine. अच्छा root 2 जो है, it's going to be somewhere over here. 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है root 2, so somewhere over here, and 2 से कम होता है, so this will be the line. Line will be something like this. ठीक है, are you guys following this? One big curve. अच्छा ठीक है. Then shall we proceed? क्या will now take the subparts. ये तो अभी तक हमने question analyze किया है. You have not even seen the questions. There are 3 questions based on this. Number of elements. See, number of elements in the set A intersection B intersection C. So they are asking the point of intersection of the 3 lines. मतलब एक circle और 2 line. उसके point of intersection. Is there any point, guys, where all the 3 are meeting? All the 3, not 2, all the 3. हाँ है ना कौन सा वाला? वन के ऊपर वाला, गुलाबी वन के ऊपर. ये. हाँ. This. नहीं. Circle meet नहीं हो रहा ना उसपे. उसके ऊपर ये. नहीं. अच्छा left पे. ये वाला. अच्छा. Correct. हाँ. क्या वो नहीं समझा? नहीं. Remember, this is the point of intersection of circle and the line. Yeah. And it belongs to that pink region now. Okay, so this is one point. Do we have any other point there? So what? Yeah, so what's answer about this? Okay. Yeah, second one what would you do? Let Z be any point in this region, A intersection B intersection C. Then Z plus 1 minus I the whole square. एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा solve करते हैं, modulus वाला equation को.
and let's see where do we land. अब यहाँ पे ना प्रवरा दो चीजें हैं तो नहीं लगेगा सॉरी. We'll have to go with the normal formula, modulus का formula. So z is x plus I by, चलो solve करो आपको. Modulus का square भी होता है, right? So square root count नहीं करेंगे, तो square root and square will be eliminated. मैं directly कर रहा हूँ, आप लोगों को देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? It's x plus 1 the whole square plus y minus 1 the whole square plus x minus 5 the whole square plus y minus 1 the whole square. मैंने directly किया. If you have any doubts, you tell me, Pravra. I'll just elaborate this. मैंने एक स्टेप में कर लिया. z को एक्सप्रेस आया है ना, z को एक्सप्रेस आया है लिखा बराबर है. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सारे रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ लिखा और फिर मॉड्यूलस हटाया, स्क्वायर और एडवांस स्मार्ट है. इसको एक्सपांड करें, इसको एक्सपांड करें. हाँ, इसको थोड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा. सो z इज एनी पॉइंट इन दिस एंड देन दिस लाइज बिटवीन. जस्ट सिंप्लीफाई दिस कंप्लीटली. So are you guys getting 2x square plus 2y square? This will be 2x minus 10x, which is minus 8x. This will be minus 2y which is minus 4y plus 1 plus 1 plus 1, so that's 3 and 25 plus 28. Are you getting this program? Yeah. ठीक है. अब इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है, because we have to find basically this lies between. So differentiate कर रहे हो? नहीं differentiate और guys will not go there. See, because you have to realize what is z over here. Z is any point in this A intersection B intersection C. And do you realize A intersection B intersection C में तो एक ही point आ रहा है. तो if you can just find the coordinates of this point तो काम कितना easy हो जाएगा. तो उसके लिए सर्कल का इक्वेशन और ये जो लाइन का इक्वेशन उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. सी लाइन का इक्वेशन हमें मिला x plus y equal to root 2. अब देखो सर्कल का इक्वेशन क्या मिलता है. हैव यू गाइस रिटन दैट? मैंने इरेज कर दिया. इज इट x minus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square equal to 9? 3 square which is 9. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. नहीं ठीक है. हां यू आर द स्मार्ट गाय, यू डू इट. आ गया सर, एक पॉइंट होगा. कर लेते हैं ना प्रॉब्लम. सो मैं क्यों नहीं कर सकते dy by dx? 2 minus क्योंकि मेरे पास 4y और इस सब पे है, तो मुझे dy by dx मिलेगा. डिफरेंशिएट करने के बाद but dx तो 0 हो जाएगा. तो ऊपर तरीका है कि लेस ना हो. Really sorry about that. ये हुआ ना. I wish there was some. Okay. 1 minute. 1 minute guys. 1. Maybe. Let's see. Maybe इसको एक काम करते हैं, एक्सपांड कर देते हैं. पहले ओरली बताओ. इसको एक्सपांड करो. एक्सपांड ऐसे भी करना तो ठीक है ना. x square plus y square minus 4x minus 2y plus 5 equal to 9. बराबर. x square plus y square minus 4x minus 2y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा यहाँ से? 4 मिलेगा. ये समझा आपको? अब देखो मैजिक होगा. मैजिक इसमें से 2 कॉमन लो. व्हाट विल बी गेट इन द ब्रैकेट? ये वही मिल रहा है क्या? तो 4 डाल देंगे वहां पे. 2 4 8 28 से 36 is the answer. 35 and 39 के बीच में. It just clicked. क्लिक नहीं करना पड़ता, सॉल्व करना. तो सॉल्व करना मतलब आपका दिमाग कुछ अच्छे से क्लिक होना चाहिए. यही है.
क्या just one of those things नहीं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ you have to be in a good frame of mind and that can happen only when you are doing what you enjoy doing. So we'll proceed to the third question on that note. See, if you're doing this forcefully, then you buy it. Third question. Yeah, third question. हाँ क्या बोल रहे थे? नहीं हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं. She understood that. Forcefully से वो मेरा मतलब समझ गई. नहीं वो मैं force. Okay, cool. Cool. हमेशा से करते हो आप. Already मैं गर्मी से आई हूँ अपनी को और तंग कर जा रहे हो. कहाँ से आए? गर्मी रखी है बात. वो गर्मी. दिमाग उड़ गया मेरा. That is why it didn't click. See. No. Yeah, that's exactly what I meant by good frame of mind. Okay, we'll proceed to the next one. एक मिनट ये थोड़ा मैं erase कर रहा हूँ because we have to see this question. They have given omega is any number which satisfies omega minus of 2 minus I less than 3, then modulus of z minus modulus of omega plus 3. Modulus of z minus modulus of omega plus 3. Modulus of z minus modulus of omega plus 3. ठीक है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है. It lies between which two numbers? And it is given that mod of z minus omega, mod of omega minus of 2 minus I minus 2 minus I is less than 3. So omega sorry. Good frame of mind की काफी आवश्यकता है. As is checking क्या पता ध्यान है भी नहीं. कर्मणि सर्वग्राज करा. तो चलो ये क्वेश्चन देखिए कुछ समझ में आया आप लोग को? mod of omega minus of ये वो ओमेगा वाला ओमेगा है. नहीं this is नहीं they have not written that, right? So this is any random complex number. That they have written. Omega is not written but it's understood it's a complex number. Yeah. You have to understand that. Come on. क्या understand? Omega has to be a complex number. अरे because don't you realize ये देख के कुछ क्लिक नहीं हो रहा है क्या? अभी तो हमने किया ये. कुछ कॉमन लेके होगा. नहीं. This is a special equation. Which equation is this? Mod of omega minus 2 minus I. Common ले लो minus. Hey guys, don't you realize this is a circle? This is representing equation of a circle. So ये help कैसे करेगा? तो आरुष इसका क्या मतलब है ये equation का? In fact, if you realize, it is the same circle that they are talking about. अच्छा, help ऐसे करेगा that omega lies in the interior of this Arush. ठीक है, less than 3 है. So it lies within this circle. ये एक हमें पता चल गया. ठीक है, and we have mod z minus mod omega plus 3. तो now we have to find the maximum and minimum value of this. ये कौन से दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा? तो ओमेगा 3 से कम आंसर बी है क्या? सॉरी हाँ क्या आंसर? डी. नहीं B. See, you have to realize guys that omega is some random point on in this circle, ठीक है? And center तो fixed है अपना, बराबर? Center तो fixed है. Okay. So we want the maximum value. वहाँ से start करते हैं. Now do you realize that maximum value कब होगा? जब नहीं when we talk about a circle, हाँ z के साथ 3 होगा बराबर है. एक मिनट. Honestly, you can't blame me. D option is the answer. The equation is y equal to 3, correct? This is y equal to 3. नहीं, y equal to 1 है ये.
greater than equal to. Let's find this point of intersection, guys. How will you find this point of intersection? सर्कल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, बराबर. इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y को 1, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? ये जो रेड वाला लाइन है y इक्वल टू 1 और जो सर्कल है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करता है. हाँ, you are saying something? नहीं, अरे मैडम, that line is different. That line is this line. This is x plus y equal to 1. ठीक है, तो ये सर्कल तो सर्कल के इक्वेशन में y को 1 डाल दोगे तो क्या होगा? 0, बराबर. तो x minus 2 the whole square is 9. So what will we get? It will either be minus 1 or 5. This will either be minus 1 or 5. बराबर. So see. क्वाड्रेटिक का ही करना. क्या? क्वाड्रेटिक है. नहीं. So now understand this, guys. देखो z जो है, what is z representing? Z is any point on this. Arush, Pravra, we have to find this. बराबर. Mod z minus mod omega. Do you realize, Pravra, z was any point on the boundary of the circle? ये जो हमने डिस्कस किया था. अब उसका अगर मैक्सिमम डिस्टेंस हमें चाहिए, if we want the maximum distance between z and omega, हमें ये फाइंड करना है. Which means we want distance between z and omega. Omega है कहाँ? Omega is somewhere inside the circle. Now, for the distance to be maximum, do you agree with me, Arush, Pravra, that these 2 points have to be diametrically opposite? 6. So, can we say that this is less than 6? हाँ, right. अच्छा, which means कि modulus का जो difference होगा, it will either be more than minus 6 or it will be less than 6. यहाँ तक समझा आप लोगों को? ठीक है, mod जब हटाते तो एक बार प्लस एक बार नेगेटिव आता है. And Arush, जब नेगेटिव आएगा तो साइन फ्लिप हो जाएगा. Less than becomes greater than. Linear inequality. Modulus. Whole. All right. तो we are done, guys. हमें find क्या करना है? We are supposed to find modulus of z minus modulus of omega plus 3. तो हो गया ना? इसमें plus 3 कर दो. If I do plus 3, what will be the answer? This will be plus 3. This will be plus 3. So it is between minus 3 and 9. It is D. Yeah, minus 3 and 9. Are you guys writing this? Right. So from a particle P starts from the point Z0, which is 1 plus 2i. It moves first horizontally away from the origin by 5 units and then vertically away from the origin by 3 units to reach a point Z1. So guys, first you will have to tell me the coordinates of Z1. 5 no? नहीं, तो वो सब पर तूने गड़बड़ किया थोड़ा. See, this is 1 plus 2i Pravra Z0. And then it's moving horizontally from origin by 5 units. मतलब horizontal मतलब x coordinate change होगा 5 units से. So Z1 का x coordinate 6 हो जाएगा, 1 plus 5 is 6. And vertically by 3 units. So this is 5. 6 plus 5i, which is 6,5. From Z1, the particle moves root 2 units in the direction of this vector, and then it moves through angle of pi by 2 in anti-clockwise direction. So ये दिया है क्या? ऐसा लग रहा है ना? I think मैं ठीक है, so you will do solve this. समझाइए सर. ना. Or maybe you have done something similar to this in rotation, but not the exact same meaning. Big Nose Box question 3. उसको ना ऐसा हो सकता है. ठीक है, anyways, let's proceed. So we have from Z1 the particle moves in this direction. Now do you realize, Pravra, Arush? See, vector I plus j का जो direction है. Now you have to understand this, that vectors is related with trigonometry in such a way that I coordinate represents cos theta, j represents sin theta. Polar coordinates का idea है आप लोगों को? Do you have any idea about polar coordinates? Polar. हाँ, polar. अच्छा, polar. नहीं, polar. हाँ, वैसे ले लो या इसका पोलर फॉर्म ले लो या फिर वेक्टर्स का पोलर फॉर्म. हाँ, that I am actually not saying that. What I mean is, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोग को. See, I cap plus j cap का क्या मतलब है? That the x coordinate is 1 and the y coordinate is 1. So 1, 1 is the point. तो अगर ऐसा एक ट्राइंगल हम बनाए, right angle triangle, this vertical distance is 1, horizontal distance is 1. If this angle is theta, what is sin theta? What is cos theta? हाँ, तो ये root 2 होगा because Pythagoras है. So you'll get sin theta is 1 by root 2, cos theta is 1 by root 2. बराबर है.
Okay. So now the thing is, guys, that when we are moving z1 root 2 units in the direction of I plus j, तो जो नया कोऑर्डिनेट होगा उसको मैं z डैश बोल देता हूँ फिलहाल. This z dash, Pravra, because it is I plus j, it is going to be cos 45 plus I sin 45. क्या नहीं नहीं समझा. What is cos theta sin theta over here? Pravra 1 by root 2 आ रहा है बराबर. ठीक है 5/4 बराबर करेक्ट. पाई बाई 4. तो इसीलिए मैंने सीधा cos 45 sin 45 लिखा. एंड रूट 2 यूनिट्स बोला है राइट. इट मूव्स रूट 2 यूनिट्स, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस रूट 2 विद बोथ. इसका वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर I plus G का वेक्टर है कहां? सो I plus j का जो वेक्टर होगा दैट विल मेक एन एंगल 45 डिग्री मतलब जो 1,1 है वो विद ओरिजिन. ऐसे देख लो, ये ओरिजिन के साथ जो इसका वेक्टर होगा दैट विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि रूट 2 आ रहा है ना उसमें. 1/√2 आएगा. cos 45 sin 45 होता है 1/√2. So that is why I have taken sin 45 and cos 45. रूट 2 इसलिए आया क्योंकि रूट 2 यूनिट्स बोला है. From z1 the particle moves root 2 units in the direction. नहीं, वो जब मूव करेगा तो मल्टीप्लाई होगा ना. ऐड थोड़ी होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव नहीं हो रहा है, ऐसा रोटेट हो रहा है वो. डायरेक्शन z0 से स्टार्ट होगा z dash z डैश पे आ रहा है. z0 नहीं, z1 से स्टार्ट हो गया. z0 z0 से z1 तो पहुंच गया है. अब z1 से वो जा रहा है z डैश पे. तो मतलब z 6,5 क्या 6,5? 6 नहीं नहीं, वो अब आएगा. See what is root 2 cos 45 and what is root 2 sin 45? 2 So this is 1,1. नहीं नहीं, अब आएगा. हाँ ठीक है, 1 आई बस. चलो 1 plus 1 आई. So what is the final position of this z dash? जब इसमें ऐड कर देंगे we will get 7 plus 6 आई. हाँ, Pravra has some issues. Yes, Pravra, tell me. क्या हुआ, क्या नहीं समझे? So did you understand why did we take cos 45 sin 45? हां वो अंदर ठीक है. रूट 2 क्यों मल्टीप्लाई किया वो समझा. हां क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ. अच्छा, फिर उसका आंसर 1 plus 1 i होगा. ये क्लियर है? I कौन सा? Yeah, because at the end it's a complex number, right? We are in complex plane, so it's a complex number. तो जो sin वाला component है that is actually imaginary part. Polar form cos theta plus I sin theta. हां Sin theta वाला part is always imaginary वाला part. और फिर हमने जो z1 से स्टार्ट किया था उसमें ऐड कर दिया तो 7 plus 6 आया. z dash का कोऑर्डिनेट 7,6 और 1,1 बिलोंग टू 1,1. अरे वो तो उसका वर्किंग है और फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा ना z1 क्योंकि वो 1,1 उस पे आ रहा है ना, पर जो आपने बताया राइट. 1,1 उसका कोऑर्डिनेट है ना. नहीं 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 नहीं, Arush, we are rotating in it in such a way that it is डायरेक्शन उसमें रोटेट क्या उस डायरेक्शन में रोटेट किया. और कितना रोटेट किया 1 plus 1 i कंपोनेंट से वो रोटेट कर रहा है रोटेट हुआ वैसा. ये 1 जो पॉइंट है इसको ऐसे घुमा दिया वैसा. नहीं 1,1 को नहीं घुमाया है, वो तो मैं रफ वर्क दिखा रहा था कि वो 1 और 1 का 45 दिखाने के लिए. We are not rotating 1,1, we are rotating 6 plus 5i by how much? By 1 plus 1 i component. 6,5 to 8 Correct. अच्छा, next, now this point z dash, it is further moved by an angle pi by 2 in anti-clockwise direction. So see, this is the scene now. 7,6 यहाँ पे कहीं पे होगा. ठीक है, तो इसको हम रबरा, ये जो है 7,6, we are now rotating this in anti-clockwise direction. So this direction by 90 degree. So this is 90. So do you realize, Pravra, like जो पहले थीटा था अब वो 7,6 को 6,5 को घुमाना था. नहीं, now they are saying and then it moves. So then who moves? The new point. What is the new point? 7,6. And this point will be called z2. तो z2 के coordinates हमें चाहिए. So we can use the rotation formula over here. z2 will be equal to we have z dash and e raised to I pi by 2 Pravra, क्योंकि ये angle pi by 2 है.
Just complete this, guys. Write this, complete this, tell me the final answer. Yeah, write this and complete this. Recording in progress. So z dash is 7 plus 6i. E raised to I pi by 2 is cos pi by 2 plus I sin pi by 2. So we will have 7 plus 6i, and this is Euler's form and polar form का relation, if you remember. E raised to I theta is cos theta plus I sin theta. तो इसको डी मोविस थ्योरम, इसको एक्सपांड कर दो, दिस विल बी 7i plus 6i square. तो फाइनल आंसर होगा -6 plus 7i. -6, 7 coordinate. -6, 7. So if you would normally solve for it, how will you solve? क्या 7, 6 ठीक है, रोटेशन पॉइंट रोटेशन नहीं डायरेक्ट अगर कोई करेगा ना तो क्या करेगा गलती से, पता है, -7,6 कर देगा. हाँ तो पहले हो गया ना. अब ऑप्शन है. हाँ वो भी है, राइट ऑप्शन में भी है, करेक्ट. दैट विल प्रोसीड. अच्छा लिखना बाकी है, लिखो. See, in this sum z is cos theta plus I sin theta, and we have to find the value of this imaginary part of z raised to 2m minus 1. See, what is the imaginary part of z? Sin theta, बराबर. Imaginary part of z is sin theta पे होगा. So sin theta raised to 2m minus 1, and m is from 1 to 15. So see, when you substitute m as 1 in this, we will get sin theta. When you substitute m as 2 in this, it will be sin cube theta. When you substitute m as 3 in this, it will be sin raised to 5 theta. And when you substitute m as 15, तो ये होगा और मल्टीपल लगा दो 2n plus 1. एक मिनट लगाने की जरूरत नहीं है. Oh shit. Sorry guys, 1 minute. कुछ तो कर दिया आपने. इसको थोड़ा स्मार्टली करते हैं. Powers will create a problem. तो powers को हटा देते हैं. हाँ? We'll remove the powers. इसे हटा सकते हैं? I'll tell you how can we do that. तो Euler's form use करते हैं. We can write z over here as e raised to I theta. बराबर. अच्छा, और ये हो जाएगा अपना 2m minus 1. चलो, so what will we get? नहीं क्या? Z की Z is e raised to I theta. हाँ. And this is 2m minus 1. Okay, so when we multiply the powers over here, it will be I into 2m minus 1 theta. So do you realize, Pravra, Arush, this is now basically imaginary part of cos of 2m minus 1 theta क्या? plus I sin of 2m minus 1 theta. और स्लाइड में क्या नहीं समझा Pravra, we first convert this to Euler's form. I theta, correct. Then we multiply the powers, and now we are converting it back to the same form, back to the polar form. उसका reason ये है Pravra. Now what is imaginary part of this complex number? It is sin of 2m minus 1 into theta, Pravra. The advantage of doing this is the powers are not there anymore. क्योंकि वो 2m minus. आपने ये लास्ट तक कैसे? अरे imaginary part चाहिए ना, इस complex number का imaginary part is this. हो गया सॉल्व. नहीं, अब इसमें m का वैल्यू डाल दो. When you take m as 1, this will be sin theta. You take m as 2, it will be sin 3 theta. You take m as 5, it will be sin 5 theta. ऐसा चलते जाएगा. लास्ट में m इसमें 15 है. So sin of 29 theta. Now you have to compare with this, guys, and tell me what is a, what is m over here, what is t over here. A is 2 what? and B एक मिनट, a is 2 हाँ ऐसे. yeah, you are saying a is 2m. क्या बोल रहे हो? -1 एक सेकंड. हाँ ऐसे ही था कुछ जो क्वेश्चन बोल रही थी बस प्राइस में था. देखो 2 थीटा का डिफरेंस आ रहा है. तो वही उसको एक मिनट, आप लोगों के लिए थोड़ा इजी बना देते हैं. Do you realize these angles are in arithmetic progression? So it's basically 1, 3, 5 up to. अच्छा A और D वो है. तो A is 1, E is 2,
ठीक है क्या अरे मेरे को जरा ए और को कंपेयर करके बता। ठीक है समझ के बाद है ना मैं कोई प्लस है एंड दूसरा है कोई काम नहीं अच्छा एक मिनट but 1 minute what for the first term when we take n as 1 तो हमें मिलेगा क्या हुआ सर एक मिनट the first term is not theta in this case if we take 1 into आरुष तो हाँ 3 theta आएगा ना if we take a as 1 and b as 2 तो 3 थीटा आ तो रहा सेकंड हाँ तो आप क्या करोगे नहीं बट n को 1 लेके 3 theta आएगा ना हां theta आना चाहिए n को 1 लेके theta आना चाहिए m1 मतलब फर्स्ट term हाँ तो फर्स्ट में Sin साइन theta थीटा है हाँ तो आ तो गया तो पहला टर्म तो वही है ना what I'm saying is if you take a as 1 b as 2 then first term will not be theta it will be 3 theta क्या a plus n minus 1 d जब लगा रहे हो वैसे अच्छा हाँ एक्चुअली 3 आ रहा है Yeah. नहीं ये एक हाँ बोल दो फॉर्मूला लगाने की जगह sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस up to sin 29 theta sin c plus sin d का फॉर्मूला अच्छा मर जाएगा कोई ये करते करते नहीं मतलब sin थीटा और sin 29 थीटा को साथ में लो ठीक है ले लिया फिर sin 3 थीटा पर उसमें होगा क्या अरे सुन सुन हाँ एक्चुअली नहीं सुन तो सही उसमें होगा क्या you take theta and 29 theta together so that's sin c plus sin d which is 2 sin c plus d by 2 तो उसमें आ जाएगा 15 theta and दूसरे में आएगा cos 14 theta सेम उस पे नहीं पता था cos भी the problem is cos d आ रहा है को चेंज कर तो उसमें होगा क्या पता नहीं उसमें होगा क्या उसके बाद नहीं प्रॉब्लम उसके बाद है ना सब टर्म्स में 2 sin 15 थीटा आएगा सब में आएगा हमने cos फिर वो कॉमन लेके फिर cos को ऐड करना पड़ेगा ठीक है बहुत Too much. एंड दैट इज व्हाई वी नहीं ये फार्मूला का जो प्रूफ है ना वो वही है जो तू बोल रहा है जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस यू रीच एट दिस फार्मूला एक बार सर दिखा सकते हो क्या करते हैं चलो करते हैं एक बार मैं ये करता हूं मैंने क्वेश्चन ठीक है लेते हैं तो बेसिकली समेशन ऑफ ऑल दीस थिंग्स